Hello, dear aspirants. Welcome to Institute of Civil Services. I am Sharlu Gupta, and today I will be going forward with the topic that is Indo-Pakistan. Okay, first we will see the border. किस-किसको border करता है Pakistan? This is Pakistan, as you can see in the map. So it borders three areas only. One area will be Iran. This area, Iran को border करता है. Second, of course, Afghanistan, and the third will be India. Okay, third will be India. सो थ्री कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, दैट इज ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया. ओके, चाइना के साथ बॉर्डर नहीं, बिकॉज वी कंसिडर दिस एरिया ऑफ आर्स. ओके, सो let's see the important points that have to be understood with respect to Indo-Pakistan relation. Okay, so first will be that we share land and maritime boundary both. As you can see that we are sharing the land boundary here. From here we are sharing the land boundary, and from here we are sharing the maritime boundary. तो हमारे पास both एक्सेस है, सी से एक्सेस है और लैंड का एक्सेस है. ओके, एंड उसको पाकिस्तान को हम लोग ब्रिज स्टेट भी कहते हैं. ब्रिज इज लाइक पुल स्टेट भी कहते हैं. पुल दो रीजन्स को कनेक्ट करता है, जस्ट लाइक कनेक्टिंग दी साउथ एशिया टू वेस्ट एशिया, एंड इट इज connecting Central Asia to South Asia. Okay, so as you can see here that first it is connecting the Central Asia with South Asia. Okay, and this is West Asia connecting with South Asia. Okay, so third point will be Pakistan resources are limited. उसके पास resources अच्छा नहीं. It is not a very resourceful country. India is a very resourceful country. हमारे पास काफ़ी resources हैं और पाकिस्तान के पास इतने resources नहीं है. So first point according to the resource will be it is highly dependent on the Indus River. एक ही या दो ही मेजर रिवर्स हैं जो वहां से फ्लो करती हैं. इंडस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द पाकिस्तान. हमारे इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, एंड मैनी सदर्न रिवर्स, मैनी रिवर्स. सो इट इज बेसिकली एरिड कंट्री, है ना. इट इज डिपेंडेंट ऑन rainfall, no perennial river rainfall, and this is the only perennial रिवर जो कि हमेशा सदाबहार रहती है. ओके, उसका जो मोस्ट फर्टाइल रीजन है वो भी लिमिटेड टू पंजाब रीजन है. इट्स रीजन. ओके, पंजाब रीजन कौन सा? पाकिस्तान वाला पंजाब रीजन. एज यू कैन सी इट हैज बीन डिवाइडेड. जब पार्टीशन हुआ था तो एक पंजाब का रीजन ये था, एक पंजाब का रीजन ये था. तो ये वाला जो एरिया है दैट इज ओनली फर्टाइल. ओके, पेट्रोलियम हमें बलूचिस्तान में मिलता है और ग्वादर पोर्ट से वो एक्सपोर्ट किया जाता है. ओके, बलूचिस्तान इज द area here, okay, in the southern part. And the next point will be Indian Ocean coastline with ports like Karachi and Gwadar. Okay, so Karachi and Gwadar भी ports हैं. As I said, the Gwadar port and Karachi port, these two ports are very important if we see from the perspective of Pakistan. Okay, and as we can say that we often hear Rawalpindi and Islamabad नेक्सस. ये चीज हम सुनते रहते हैं अक्सर, हम लोग न्यूज में यही दोनों सुनते हैं. तो नेक्सस ये है, रावलपिंडी इज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स. ओके, इट्स अ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और वो लोकेटेड नियर टू द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान दैट इज इस्लामाबाद. ओके, सो एक बार ये ग्राफ देख लीजिए. कैपिटल इस्लामाबाद है, प्रोविंसेस 1 2 3 4, चार ही प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनवा. ओके, इट इज खैबर पख्तूनवा. ये एरिया भी डिस्प्यूटेड है with the Afghanistan. Okay, population 22 crore है and GDP is $278.3 billion. Moving next, this is a brief history. You can just pause the video, take the screenshot of it, and you can see how the history has evolved in one pic only. So first of all, we will be dealing with this on later. तो पहले ये है लेटर डिफिकल्ट रिलेशंस, है ना. ये हमारे डिफिकल्ट रिलेशंस हैं. मतलब अगर हम लोग डिफाइन करें, हम लोग कोई पूछे कि इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशंस हैं, तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि डिफिकल्ट रिलेशंस है ना. और दिस इज अमंग द फोर मोस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस ऑफ इंडिया.
है ना, फोरमोस्ट, सबसे मतलब बहुत ही कठिन चैलेंजेस में से एक है ये, एंड ऑफन रेफर्स टू एज ब्रदर एनिमी। पाकिस्तान हम लोग को ब्रदर एनिमी कहता है। ओके, और कैसे रिलेशंस हम लोग को देखने मिलते हैं, साइक्लिकल रिलेशंस। ओके, साइक्लिकल पैटर्न है जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन यूज इट इन मेंस, essay एंड ऑप्शनल। ओके, यूपीएससी और यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस में तो essay में काम आ जाएगा, मेंस में काम आ जाएगा, नॉट द ऑप्शनल। ओके, optional has been replaced with the UP papers. So we see dialogue, disruption, then dialogue. D D D. Okay, D D D. It's a pattern. Okay. So dialogue हम लोग examples, जैसे examples हम लोग justify करेंगे कि कैसे dialogue होता है, फिर disruption होता है। तो dialogue में जैसे in modern history we see, modern history before the partition we see various negotiations like Muslim League accepting the two nation theory, but Indian National Congress was not accepting. So this is a type of dialogue. Okay, एंड डिसरप्शन कैसे हुआ, जैसे पार्टीशन हुआ तो हम लोगों ने देखा कि इट वाज दी मैसेकर, इट वाज crisis, a huge crisis. The war was fought from both sides and many lives and property were lost. Okay, और उसी समय कश्मीर ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 1948 में। ओके, so we will deal with it later. So this is the actually brief thing that in 1960 what we have done with India, what we have done with Pakistan. So first will be we have done Indus Water Treaty. Second, of course, there was, so this is like a D. Okay, dialogue. This was dialogue. This was war or disruption. This was dialogue. Account again 1971 में war हुआ. Bangladesh liberation war. Okay. फिर हम लोग ने शिमला अग्रीमेंट किया, फिर हम लोग ने लाहौर डिक्लेरेशन किया, एंड देन अगेन कारगिल वॉर। सो वी कैन सी द साइक्लिकल पैटर्न, एक घूमता हुआ पैटर्न है, वही रिपीट होता है, डायलॉग होता है, फिर डिसरप्शन होता है, फिर डायलॉग होता है। ओके, ये पाकिस्तान के साथ हमेशा रिलेशन है, ये हमारे किसी और के साथ ऐसा रिलेशन है। ओके, फिर क्या हुआ, 2001 में पार्लियामेंट अटैक किया उसने, और 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर एग्रीमेंट हम लोग उसको कहते हैं जब एक लाइन खींच दी जाती है, जहां पर वो पहुंचे थे एक लाइन डिमार्केट कर ली जाती है, तो यहाँ पर इंडियन फोर्सेस तैनात रहते हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी फोर्सेस तैनात रहते हैं, और यही मेन रीजन, मेन एक बन जाता है बॉर्डर, जिसके आप यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते और आप इंटरफेयर यहाँ नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज सीज फायर लाइन। ओके, सो सीज फायर अग्रीमेंट हो गया था और लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई थी, and this ceasefire line was called line of control, and it was the beginning of composite dialogue period or composite dialogue process. This is very very important, and this we will see in many relations, in many external relations like India Afghanistan and India US relations. Okay, this happened till 2008. Okay, and 2008 because 2008 में मुंबई अटैक्स हो गए थे, so after that कोई भी डायलॉग नहीं हुआ हमारा उनके साथ, और 2013 से 16 के बीच में हम लोग ने रिज्यूम करा। आफ्टर द अटैक वी ट्राई टू रिज्यूम द डॉलर बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट नेबर, इम्पॉर्टेंट के सेंस में कि उसमें जो खतरा, द सिक्योरिटी ऑफ दैट रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इंटरेस्ट। ओके, सो वहीं से टेररिज्म निकलता है, वहीं से अब यू कैन नॉट, आप अपने नेबर अगर आपका खराब है तो यू कैन नॉट लिव पीसफुली। ओके, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो हम लोग तभी बार बार डायलॉग करते हैं। सो रिज्यूम डायलॉग एंड कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग वाज टेकन फ्रॉम 2013 टू 2016। ओके, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देख लेते हैं, हम लोग के डिफरेंसेस हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस विथ पाकिस्तान, मतलब जो डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ इनहेरेंट डिफिकल्टीज हैं पाकिस्तान के साथ। क्या है, जैसे फर्स्ट विल बी हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव्स, द डिफरेंसेस, बिकॉज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ न्यू टू नेशन थ्योरी। Okay, we don't accept this, we accepted Pakistan as an independent nation. Okay, we accepted कि हाँ ठीक है आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप सोवरेन रहेंगे, बट वी डोंट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। ओके, अब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशन है तो कैसे भी रहे, तो उसने अपने आप को इस्लामिक स्टेट बना लिया, एक रिलीजियस स्टेट बना लिया, बट इंडिया what was it, it was a secular and unity in it was a secular country, it has been a secular nation since the independence, and we believe in unity and diversity. Okay, this is also written in preamble of Indian
कॉन्स्टिट्यूशन। अब उनके पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, उनके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है, पता नहीं कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वी विल सी इट्स अ इस्लामिक रिपब्लिक। Okay. So second, these were the structural factors. Structural factors में पहला differences in historical and political narratives. We talked about two nation theory. Then secondly, it will be about domestic factors. वहाँ के अंदरूनी क्या problems हैं, that is the nature of the state and society. वहाँ का जो political setup है और वो sorry वहाँ का जो political setup है, वहाँ का social setup है, वो भी affect करता है। कैसे? We see it as bureaucratic military oligarchy. Okay, oligarchy मतलब few रूल ऑफ फ्यू को ओलिगार्की कहते हैं। जब कुछ लोग ही पूरी सत्ता को संभालते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। एंड दिस is bureaucratic military. Okay, there's a nexus between military and bureaucracy. Okay, but basically military is having the upper hand here. Civil weak रहती है और military strong रहती है। क्यों? The reason for that you must be uh, यू मस्ट बी क्यूरियस अबाउट दैट कि क्यों ऐसा है कि सिविल पावर वीक है और मिलिट्री हमेशा स्ट्रांग रहती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिविलियंस जो थे हमारे, और उन्होंने जब मतलब दे ट्रस्ट मिलिट्री सो मच कि मिलिट्री क्लेम ऑफ बीइंग द मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन डिफाइनिंग इंडिया एज एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट। तो ये मिलिट्री जो है अपने आप को इसमें सिविल इसमें पीपल का बहुत ट्रस्ट है। पीपल ट्रस्ट द मिलिट्री रूल। ओके, बिकॉज मिलिट्री क्लेम करता है कि इट क्लेम्स दैट इट इज अ डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान, और इंडिया को वो हमेशा एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। सो इट्स द ड्यूटी, वो मानता है कि हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंडिया। ओके, एंड ऑल्सो अदर डोमेस्टिक फैक्टर्स में पहला तो सिविल ही मिलिट्री रिलेशन होगा। सेकंड इज नॉन स्टेट एक्टर्स, एनएसए, नॉन स्टेट एक्टर्स, वो स्टेट जो आउटसाइडर्स होते हैं। हालांकि ये मिसनोमर है पाकिस्तान के केस में, बट नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूड टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स। ओके, मूविंग ऑन। So even the civilian political leadership found it expedient to project anti-India image for electoral gains. अब मिलिट्री तो अपने आप को बोलती है प्रोटेक्टर, और सिविलियन भी अपने आप को बोलती है कि इट इज बिकॉज वी विल ट्रस्ट। अब जो वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हीं को ट्रस्ट करेंगे जो एंटी इंडिया इमेज बनाएंगे, है ना, जो एंटी इंडिया इमेज को कंसिस्टेंटली रखेंगे। ओके, सो इलेक्टोरल गेन्स के लिए सिविलियन लीडरशिप करती है, और मिलिट्री के लिए डिफेंडर, एज अ डिफेंडर इट पोर्ट्रेट्स इटसेल्फ एज अ डिफेंडर। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग एनी सेंस। Next, both civil and military have patronized certain non-state actors propagating hatred towards India. Okay, for example, हाफिज सईद speeches criticizing India. हाफिज सईद की speeches आप देखेंगे तो हमेशा वो criticize ही कर रहा होगा इंडिया को, है ना। So they have propagated hatred because for electoral gains. Okay. Third, there is asymmetry and search for strategic parity. Okay, there is asymmetry. Of course, हमारी geography, हमारी resources, हमारी democracy, military is larger than India. Sorry, larger than Pakistan. Larger than Pakistan. So it suffers from psychological disease, what we call as inferiority complex. Okay, so उसको inferiority complex होता है, तो it always Pakistan always tries to सर्च फॉर स्ट्रेटेजिक पैरिटी कि इक्वल हो जाए कम से कम। तो तभी उसने न्यूक्लियर वेपन उसने गेन किया। सो इट बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू गेन स्ट्रेटेजिक पैरिटी। मतलब स्ट्रेटेजिक पैरिटी का मतलब है इक्वल। So geography, resources, democracy, military, and other things are larger of India than the Pakistan. And so what it does was, so it makes alliances like USA के साथ बनाया। USA के साथ हम उसने दो alliances बनाए थे, CITO and CENTO. CITO and CENTO refers to the organization led by US. Okay, organizations led by US to prevent communism. Okay, prevent Russia's, as we can see that during Cold War, that is after the World War II, during the Cold War, there were two proxies, two great powers. First was USA, capitalist bloc,
capitalist bloc, and second was Russia, that is Soviet, sorry, Russia, not Russia, USSR. रशिया तो 1991 के बाद बना यूएसएसआर. What was it? Communist bloc. Okay. So you will read in world history about this. So it was and USA and USSR were fighting proxy wars. वो अपने proxies भेज देते थे. For example, USA ने वियतनाम में लड़ाई करवाई, and USA also sent forces, supported mujahideens in Afghanistan and Pakistan, okay, to prevent the sudden expansion of communism from Russia or USSR, erstwhile USSR, Soviet Republic. Okay, so these were the two US-led organizations, and so it makes alliances and terrorism as a low-cost option than military because और दो चीजें करता है, एक alliances बनाता है as we can see CA2 and CENTO, and secondly what it does is chooses the low-cost option. Low cost जो सबसे सस्ता हो जाएगा that will be terrorism. कोई सैलरी वैलरी और पेंशन देने की जरूरत नहीं है उनको. So they sponsor state sponsored terrorism occurs. Okay. Now और लिटरेसी रेट भी वहाँ पर 60% है, बट स्पेंड्स मोर ऑन न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम. तो ये उसका एक टाइप का स्क्यूड एक्सपेंडिचर पैटर्न है. ओके, स्क्यूड एक्सपेंडिचर. इट डज नॉट स्पेंड ऑन एजुकेशन में स्पेंड नहीं करता है, हेल्थ में स्पेंड नहीं करता है. तो उनके लोगों को अच्छा बनाने के लिए, उनके लोगों के हेल्थ के लिए, उनके लोगों को पढ़ाने के लिए इट डज नॉट स्पेंड. ओके, हमारा 73% लिटरेसी रेट है, और ये भी उन्हीं का फिगर है. आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट स्पेंड्स ऑन न्यूक्लियर. सो अपने डिफेंस में ही वो इतना खर्चा कर देता है कि वो अपने लोगों की ही कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर पाता है. ओके, एंड देयर इज ऑल्सो रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स which further complicates the relation, that is like USA and China. So Atal Bihari Vajpayee, our former prime minister, has said that you don't have permanent friends or permanent enemies, you only have permanent national interest in international relations. So next we see the divergences. Okay, this point is actually Pakistan is attractive to China because we are I have written this here because of Pakistan and China nexus. Why? Because China के लिए shortest route है पाकिस्तान के through to Arabian Sea. Arabian Sea मतलब Indian Ocean, और Indian Ocean has become a new political arena of the new world order. Okay, so divergences देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे divergences हैं. So India wants to talk about terrorism while Pakistan wants to talk about Kashmir question. वो कहता है, हम लोग कहते हैं कि terrorism के बारे में बात करें, आप terrorism कम करो, लेकिन Pakistan is always adamant on the Kashmir question. वो कहता है कि कश्मीर वाली पहले बात करो, तभी हम बात करेंगे terrorism की. So what we seek is normalization. Normalization means improving relations by narrowing the divergences in step by step manner. तो normalization मतलब कोई भी जो हमारे रिश्ते हैं उसको नॉर्मल करना. ठीक है, और क्या किया हम लोग ने, इंडस वाटर ट्रीटी किया, इसमें भी कुछ डाइवर्जेंसेस हैं. ओके, वी विल सी लेटर. लो हैंगिंग फ्रूट्स, सियाचिन एंड सर क्रीक. लो हैंगिंग फ्रूट्स मींस जिसमें वी हैव अचीव्ड significant achieve significant success, बस थोड़ा सा finishing touch is required. Finishing touch is required. Okay, so that two things will be Siachen or demilitarization of Jammu and Kashmir region, and Sir Creek. Okay, Sir Creek we will see later. एंड ऑफ कोर्स ट्रेड इज द फैक्टर. करंट में अभी जो हो रहा है कि कुलभूषण जाधव केस है, करतारपुर कॉरिडोर है, इमरान खान अरेस्ट हो गए हैं, अभी होम अरेस्ट इज देयर. ओके, चेंजिंग गवर्नमेंट्स, एफएटीएफ में भी उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया है. ओके, सो दीज आर द करंट डेवलपमेंट्स. ओके, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक चाइना, बीआरओ, स्पेशली द पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज सीपैक, China Pakistan Economic Corridor. Okay, so let's take the first issue of terrorism. तो अब क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे तो ज़्यादा मतलब रिटेन होगा.
तो क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द की एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिज्म एज एन इशू इन द इंडो पाक रिलेशंस। ओके, सो कुछ नहीं समझ में आया तो इंट्रोडक्शन ये कर सकते हैं, टेररिज्म रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर इंडिया एंड इन इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान। द यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो पाकिस्तान खुद से स्पॉन्सर करता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हैज बीन कंसिस्टेंटली फ्लैग्ड बाय इंडिया। India, this is I have written so that I can show you how to write the mains answers. So first will be introduction, then there will be body, which can be divided into 2 to 3 parts depending upon how many words you have to write, 150 or 250. Okay, so and lastly we conclude. Okay, so 3 parts are there: introduction, body, and conclusion. I have written more than 250 words just because हम लोग जो पढ़ेंगे वो पूरा नहीं लिख पाते वहाँ पर, तो इसका अगर 70% भी या 60% भी याद रहेगा तो इट विल डू द जॉब। ओके, एक्सक्यूज मी। सो द यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्टेट टेररिज्म वो पाकिस्तान करता ही है, एंड इंडिया हैज कंसिस्टेंटली आस्क्ड पाकिस्तान टू टेक कॉन्क्रीट इरिवर्सिबल एंड वेरीफाइबल स्टेप्स, concrete irreversible verifiable step. So you have to underline these points. Okay, underlining is very important. Against the terrorist groups, individuals as well as terror financing networks and infrastructure. Okay, सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप से काम नहीं चलेगा, उनके अब हो सकता है कि ग्रुप्स से हट जाएं और इंडिविजुअल्स करने लगे, लाइक वी आर विटनेसिंग न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म विच वी कॉल इज लोन वुल्फ टेररिज्म, अकेले ही सुसाइड बॉम्बर्स। ओके, सो लाइक सुसाइड बॉम्बर्स and terror financing networks and infrastructure that is taken care by FATF, Financial Action Task Force. Okay. Moving on, India has demanded that the trials for those responsible for Mumbai attacks be expedited, but its response has been unsatisfactory. Okay, Mumbai attacks जो 2008 में हुए थे, 2008 November. Okay, so but it has not given the satisfactory response. So following steps can be considered. तो स्टेप्स में हम लोगों ने 3 टूल्स मैंने आपको कल बताया था, आई थिंक इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू द 3 टूल्स to solve any conflict or dispute in international relations is first will be diplomatic, second will be economic, and third will be military. Okay, तो डिप्लोमेटिक में हम लोगों ने क्या किया, वी कैन raise the issue bilaterally, or we can use the multinational forums to isolate Pakistan, उसको हम इतना जलील करें कि वो सारे नेशंस भी उसके अगेंस्ट हो जाए और उसके साथ ट्रेड और जो भी बेनिफिट उसको कोई भी प्रोवाइड कर रहा है वो स्टॉप हो जाए। Okay, so internationally by working with the countries like US and France, bilaterally as well as important forums like FATF. Okay, so economically क्या कर सकता है इंडिया, इंडिया has revoked the MFN status, that is most favored nation status, जो कि हेल्प करता है हमारे ट्रेड में, उनके ट्रेड में हमारे ट्रेड में वी रिड्यूस द ड्यूटीज, वी अलाउ द नेशनल एक्सेस टू देयर प्रोडक्ट्स एंड दे अलाउ द नेशनल द एक्सेस टू आर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हम लोग WTO में देखेंगे, WTO जब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में तो देखेंगे उस चीज को, एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो इंडिया रिवोक द MFN स्टेटस जो 2019 में दिया था, एंड इन द सेम ईयर इंडिया इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। Furthermore, India announced the full utilization of its share of water from the western rivers mentioned in Indus Water Treaty 1960. Okay. Then militarily, India conducted raids on terrorist location across the line of control that was seen as surgical strikes. Okay, so it was surgical strikes, as we have seen in various news. Surgical strikes has occurred in 2016, and in 2019 India conducted preemptive non-military airstrikes on terrorist infrastructure in Pakistan. Terrorist infrastructure का मतलब है उनके कैंप्स में और जो खाली थे, है ना, जो वेकेंट थे और जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं थी, है ना। सो वी वर नॉट एक्चुअली वांटिंग दी वॉर विद पाकिस्तान, हम लोग को लड़ाई नहीं करनी थी, हम लोग को बस ये दिखाना था कि वी आर अवेयर एंड वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड, हम लोग को ये दिखाना पड़ता है हर बार, दैट्स व्हाई मॉक ड्रिल्स अकर। सो इट वाज लाइक अ मॉक ड्रिल, तो नॉन मिलिट्री। ओके, एंड एयर स्ट्राइक्स प्रीएम्प्टिव मतलब प्रिवेंटिव, और ये दिखाने के लिए कि वी आर प्रिपेयर्ड टू टैकल यू। ओके, so dealing with terrorism remains a continuing process which requires concerted efforts and multi-pronged approach. In this context, ऐसे ही लिखना है, ये अच्छी अच्छी इंग्लिश जब लिखेंगे तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा he will be very happy.
और जब वो हैप्पी होगा तो उस मार्क्स भी अच्छे देगा। एक्सक्यूज मी। Then in this context, following can be suggested. हम लोग लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखते हैं, वे फॉरवर्ड में सजेशन ही लिखते हैं. So what we can do is strengthening border vigilance. ये हर रिलेशन के साथ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, हर रिलेशन के साथ हम लोग पहली चीज क्या करेंगे, बॉर्डर विजिलेंस करेंगे, और बॉर्डर विजिलेंस में टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. So we will study about that in border security or the internal security section. Okay. Secondly, what we can do is strengthening the intelligence. हम लोग रॉ एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्ट्रेंथन करें, और बाकी जो बाहर की इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लाइक द CIA ऑफ USA and the Interpol. Okay, so we cooperate with them. And the third way forward can be the infusion of technology to strengthen. ये मैंने ऊपर बता ही दिया था आपको कि टेक्नोलॉजी यूज होती है बॉर्डर सिक्योरिटी में, लाइक सेंसर्स लगा दिए जाए टू ट्रैक द इन्फिल्ट्रेटर्स. ओके. और क्या, अब क्या हो रहा है कि हाइब्रिड नेचर ऑफ थ्रेट्स हैं, जिसमें कि वी आर सीइंग साइबर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर like hacking and ransomware. You must have seen in the news. तो we call it information warfare. तो हम लोग को उसको भी टैकल करना है. So we have to upgrade our security infrastructure. What we call is critical information infrastructure. Okay. Lastly, focus has to be on de-radicalization efforts. De-radicalization के भी 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज दैट इज पहले तो de-radicalize करना है उसको जो ऑलरेडी रेडिकलाइज हो गए हैं, और दूसरा वो होता है कि जो होने वाले हैं उसको काउंटर करें. सो फर्स्ट इज रेडिकलाइजेशन, फिर उसके बाद de-radicalization, then the third will be counter radicalization. Okay, so counter radicalization, we can see that. So, to conclude, dealing with terrorism requires a global effort. The earliest adoption of a comprehensive convention against international terrorism. This is very important. You must quote this in every written examination, be it UPPCS or be it UPSC, be it optional or be it essay. You must quote the CCIT, which was proposed by India. It is it was proposed in 1996 by India. That's why it becomes important. Okay, Comprehensive Convention Against International Terrorism, CCIT. Next is the issue of Kashmir. You can get the PDF in the my Telegram group. So we can see that okay, earlier I said 1948 में instrument of accession हुआ था, वो गलत है. It is October 1947. Okay, my mistake. Then 1949 में we had a ceasefire agreement with the help of UN. Wars चले आ रहे थे, मैसेकर्स हो रहे थे, उधर से लोग हमारे मार रहे थे, हमारे लोग उधर से मार रहे थे. तो देयर वाज कौन सबसे ज्यादा मर रहे थे? सिविलियंस ही सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे. Okay, they were destroying massive property and lives. So with the help of UN, we did ceasefire agreement, and we demarcated the boundary line. And 1972 में शिमला एग्रीमेंट में, आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इसमें यूएन की हेल्प नहीं थी. हम लोगों ने बायलेटरी, हम लोगों ने दोनों साथ में बैठे और वी कन्वर्टेड द सीज फायर एग्रीमेंट इनटू LOC. सो रिमेंबर, द सीज फायर एग्रीमेंट फर्स्ट वाज सीज फायर लाइन. इट वाज ओनली कॉल्ड इंटरनेशनल बॉर्डर, then it was converted into LOC. Jammu and Kashmir is integral part of Indian Union. Always write this because it is. Apart from historical and cultural factors, the signing of instrument of accession by Raja Hari Singh has legally cemented this position. So, because the plebiscite was happening in, what happened was that after the partition, to reclaim Kashmir area to Pakistan, उन्होंने अपने tribes भेज दिए. So the Pashtun tribes invaded Kashmir. So that's why also we retaliated then. हम लोग ने भी उसका बदला लिया. तो जहां तक हमने बदला लिया था वो वही लाइन डिमार्केट कर ली गई. जहां तक वो उनके फोर्सेज आए थे, हमारे फोर्सेज आए थे, वही लाइन LOC बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल. Okay. So on the other hand, Pakistan considers the issue to be an unfulfilled agenda of partition.
ओके, ये कश्मीर उनको लगता है कि कश्मीर की जो राजा थे वो हिंदू थे, बट द पॉपुलेशन वाज मुस्लिम, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मुस्लिम। तो पाकिस्तान सीज दैट उनको हमारे आना चाहिए था। तो दैट इज द अनफुलफिल्ड एजेंडा, ये चीज हो नहीं पाई पार्टीशन में और इसको करनी है हमें। इनिशियली इट ट्राइड टू कैप्चर द टेरिटरी बाय सपोर्टिंग द इन्वेडर्स, जो मैंने बताया पश्तून वाले, इन 1947, आल्सो इंटरवीनिंग मिलिटरीली, साथ में मिलिट्री भी भेजी थी। Having failed to fulfill its motive, it start through these were traditional, and आपने invaders भेज दिए, mercenaries भेज दिए, military force with that was traditional. Now it took a new route, okay, that is non-traditional, that is insurgency and cross-border terrorism in the late 1980s. There is Taliban, Al Qaeda, etc. And one is Haqqani network. That was Haqqani network responsible जो 2008 मुंबई अटैक्स हुए थे. So that was Haqqani network was the part of it. Then Pakistan also has also sought to internationalize the issue by raising it at forums such as the UN and the Organization of Islamic Community. Okay, however, these attempts have produced diminishing returns. Over the years, the international community has supported India's position and concern. सो ज़्यादातर जो कम्युनिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंडिया को ही सपोर्ट करती है, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया सपोर्टिंग पाकिस्तान, लाइक टर्की एंड सऊदी अरेबिया, मलेशिया एंड चाइना, दीज ओनली सपोर्ट पाकिस्तान। ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट ही होते हैं उनके। चाइना का तो पता ही है कि इट वांट्स टू कंट्रोल द इंडियन ओशन, तो वो जितना पास आ जाएगा इंडिया के उतना ही वो निगरानी रख लेगा। सो पाकिस्तान अपोज द मूव एंड sought to create an international opinion against it, of course. However, this attempt also gained limited support from few countries, China, Malaysia, and Turkey. Okay, given the Pakistan's attempts at fomenting troubles and internationalizing issue, India has clearly defined its position as follows. So, Jammu and Kashmir, as I told you, it will be integral part of Indian Union. Secondly, any issue pertaining to Jammu and Kashmir is a matter of domestic policy. Okay. So, domestic policy may just say, for example, the in 2021 or 2022, during the Independence Day speech of Prime Minister, he talked about Gilgit-Baltistan. Okay, and we are also providing the international WMO bulletin. Sorry, this is WMO bulletin for the Pakistan occupied Kashmir. Okay, ताकि हम उनको लगे कि हाँ ठीक है, वी जस्ट डोंट हैव टू शो इन द मैप, हमें मैप में नहीं दिखाना है कि वो हमारा पार्ट है, हमें ये भी दिखाना है कि वो हम ही लोग हैं और हम उसके लिए केयर करते हैं, हमें वो सेंस ऑफ फीलिंग और सेंस ऑफ केयर भी दिखानी है। तो सेंस ऑफ केयर हम लोगों ने वेदर फोरकास्टिंग के रूप में दिखाया। थर्डली, नो रोल ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, नो रोल ऑफ थर्ड पार्टी, कोई यूएसए चाइना इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, एंड इश्यूज हैज टू बी टेकन विद पाकिस्तान ऑन द मैटर दैट आर लिमिटेड टू दोज पार्ट्स ऑफ टेरिटरी, बस उसी में ही करना है, ये नहीं कि पूरा ही लद्दाख वाले एरिया में भी आ गए। दैट्स इट, दिस इज द only part which has to be considered while having the conversation. Then the above position has been cornerstone of Indian foreign policy as conveyed through the parliamentary resolutions of 1994 and reiterated in 2013. So this is the position of India with regard to Kashmir issue. Okay, Lahore Declaration 1999. We can just in brief you can understand. So one can choose its friends but not its neighbors. This was the code by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. So we started composite dialogue process with effect from 2003 to 2008. As I told you earlier that we started it, and 2008 में जब मुंबई अटैक्स हो गए तो we stopped it, of course. And composite dialogue process शुरू हुआ था। इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो भी कर सकते थे, जो भी पाकिस्तान और इंडिया जो भी डिप्लोमेटिक टॉक्स कर सकते थे, we raised that issue like family reunions, cross LOC trade like bus service from Srinagar to Muzaffarabad, सीक्रेट चैनल मेकिंग, और सीक्रेट चैनल्स भी थे जैसे एलओसी एज मेकिंग एलओसी एज डी फैक्टो बॉर्डर, क्रिकेट डिप्लोमेसी, दीज वर मतलब बेस्ड ऑन सॉफ्ट पावर, फैमिली, कल्चरल टू कल्चर रिलेशन, वही इशू, वही मुद्दे वी वर टॉकिंग अबाउट इट। ओके, सो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, एंड उधर के पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ थे। कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ इश्यूज, एज आई टोल्ड यू, जम्मू एंड कश्मीर इशू भी लिया गया था, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी इशू भी लिया गया था, सर क्रीक इशू भी लिया गया था। इट वाज ऑल टॉक्ड अबाउट इन दी कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस।
इट वाज आल्सो मल्टी लेयर्ड, इसमें मतलब तीनों लेवल की मीटिंग्स होती थी। प्राइम मिनिस्टर जो हाईएस्ट लेवल मीटिंग थी, देन फॉरेन मिनिस्टर जो सेकंड उसके नीचे लेवल की मीटिंग थी, और सेक्रेटरी लेवल पे भी मीटिंग होती थी। तो मतलब इट वाज दी सब कुछ कोशिश करी हम लोग ने, ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे, वी आर डूइंग थिंग्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। दैट इज द फिलोसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, कि दुनिया एक परिवार है। ओके, इट एंडेड बिकॉज 2008 में परवेज मुशर्रफ जी को भगा दिया गया था पावर से, और मुंबई 2008 में अटैक हो गया था, दैट्स व्हाई इट एंडेड। सो इट इन ब्रीफ यू कैन अंडरस्टैंड लाहौर डिक्लेरेशन।